It's Kisan Kranti Farmers Protest 2.0 with the call of Chalo Dilli once again. Now, right ahead of the Farmers' March to the national capital on February 13th, which is tomorrow, Delhi has imposed Section 144. The prohibitory orders banning large gatherings will remain in force till March 12th. In Haryana, heavy police deployment to block farmers who are planning to march to Delhi. We're going to get you the whole report. You can see on your television screen the kind of security apparatus that has been put in to stall the Farmers' March. But the question is, why are they marching again when they called off, if you remember, a protest which carried on for nearly 2 years last time? Here's more. Iron nails, barbed wires, concrete barricades. The borders of Delhi reinforced to block the thousands of farmers marching towards the national capital. The farmers from Punjab, Haryana and Uttar Pradesh have threatened to enter Delhi on Tuesday. Section 144 is imposed in the capital city. I am here at the Tikri border and I'll show you the arrangements which are made by the Delhi police. They have installed barricades as well as barbed wire so that no protester could climb it or could have tried to reach the national capital. On the other hand, I'll also show you they have also installed containers as well as long and wide slabs of cement to stop the protesting farmers. The Haryana government has suspended internet services in multiple districts. The Punjab-Haryana border is also blocked. तकरीबन 70 मीटर के इलाके में सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई है और इस बैरिकेडिंग के बीच में सीमेंट का मसाला भरा हुआ है ताकि ट्रैक्टर या किसी अन्य मशीन से इनको खींचा ना जा सके। अगर ट्रैक्टर आगे भी बढ़ते हैं तो सीमेंट के मसाले में ये कांटेदार कीलें लगाई गई हैं ताकि टायर यहाँ पर पंचर हो जाएं। इसके अलावा अगर यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं। जब सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो फिर इस प्रकार के जो धरने प्रदर्शन है वो नहीं करना चाहिए। The farmers are demanding a law for MSP, pension for farmers, and land labourers. Loan waivers and withdrawal of cases slapped on them. हमारी कमिटमेंट्स तो पूरी कर दो, हमें जाने की जरूरत ही ना पड़े। पाओगे तो ये बैरिकेडिंग करेंगे, ये अगर इधर आओगे तो कील लगा देंगे, आपके टायर फाड़ देंगे, आपके ऊपर गोली चला देंगे। तो कोई तरीका थोड़ी है लोगों के साथ बात करने का। The farmers, however, are divided. The Samyukta Kisan Morcha, the umbrella body that spearheaded the protest against farm reform laws in 2020, claims the march is not called by them. संयुक्त किसान मोर्चा अपने ढंग से अपने मुद्दों के ऊपर मजदूरों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहा है। 13 फरवरी वाले का आह्वान नहीं है, उसका 16 का आह्वान है और उसके आगे की रणनीति बाद में घोषित की जाएगी। The Congress and Aam Aadmi Party have backed the farmers. हरियाणे च की कर रहे हैं? हरियाणे वाली जिहड़ी पंजाब वाली हद है उत्थे डेडे किल ला रहे ने, पत्तियां तारां कंडियालियां तारां। मेरी फिलहाल तो मेरी बेनती है केंद्र सरकार नूं कि किसानां नाल गल कर लो, उन्हां दीयां मंगां जायज़ जिहड़ियां ने मान लो, तुसीं इंडिया ते पंजाब दा बार्डर ना बनाओ। The protest of 2020 had forced the Narendra Modi government to scrap the 3 farm reform laws, allowing bigger role for private players. The demand for a law on MSP remained unresolved. Will the government now bow to the farmers ahead of the big Lok Sabha elections this year? With Satyendra Chauhan, Anmol Bali, Sushant Mehra, Arvind Ocha and Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
Let's also tell you, viewers, that the government is actively seeking to speak with and mediate where the farmers are concerned to possibly stall the protest or the clarion call of Chalo Dilli, where thousands of farmers with their tractors once again would be marching to the Delhi borders. The meeting right now with the likes of Mr. Piyush Goyal and the farm unions is on. Will something come out of that? Trust us to get you the latest. But the time is ticking in terms of the march has been called by tomorrow morning. So tomorrow morning you will see a sea of farmers marching towards the borders of the national capital if this meeting remains unsuccessful. On the other side, the government that you can see has already got into action where security apparatus strengthening of it is concerned, barricading various levels where Haryana and Punjab roads are concerned, leading to the Delhi border. I want to cut across right now immediately to our panelists this evening from the Bharatiya Janata Party, Anila Singh, Ikram Singh Sandhu, spokesperson Congress, Choudhry Pushpendra Singh will be also joining us. He's a farm leader. He is also marching to the borders of the national capital tomorrow. I want to begin with you, Anila Singh. You've had your delegation of ministers trying to mediate, speak to the farmers, but every time, every meeting, it's still a dead end. What's been the biggest problem? My Ram to all, and definitely as a responsible government, it is the duty that they should have a dialogue with the protesters. So if we talk about the farmers who are protesting or they are going to give a call, they have given a call for 13th of Feb. I can say one thing only, that in all these years, or I can say in last 10 years, the amount of work Modi Sarkar has done for the farmers, that is remarkable. But the thing is, if something is happening near the elections, then we have to think that is it politically motivated? Because nobody can say this, that Bharatiya Janata Party government has not tried to do the things which any farmer deserves. So whether it is about the Kisan Samman Nidhi or we talk about the fertilizers. But Anila Singh, you'd also in any case the last time around, the big massive protest that had taken place where the farmers were concerned, even at that point of time in the beginning, the Bharatiya Janata Party and your government called it political. There was no election on the anvil then. I am questioning the timing. And I have got all the reasons. But you questioned the timing then as well. And there were no elections at that time. I want to mention one thing here, Preeti, at the beginning, because I feel sad when I came to know about this call. I felt very sad. The reason is because this political party, this government you have seen that recently Bharat Ratna has been given to Choudhry Charan Singh Ji. Kisan Masiha. Okay. Swaminathan ji. But I want to bring in Ikram Singh Sindhu and we'll also bring in Pushpendra Singh Choudhry, who's a farmer. But, Anila Singh, on that account, there would be farmers who will turn around and say, we don't want tokenism. Keep your tokenism to yourself, but give us deliverance on what you promised. It is a tokenism giving Bharat Ratna to Swaminathan ji and Choudhry. No. That is what the protesting farmers are saying, ma'am. They are saying implement the Swaminathan report instead of giving Bharat Ratna to MS Swaminathan. That is what the protesting farmers are saying. That's all I'm trying to convey. Can anybody deny this fact that we have been increasing? I want to bring in Ikram Singh. Sandhu into this conversation, spokesperson Congress. Ikram Singh Sandhu, once again, the Congress is being charged to fire on the shoulders of the protesting farmers. You yourself understand one of the key demands that the farmers have put forth, which is MSP on all crop, or at least the plus 11 crop, is impossible to deliver for any government, including yours. States will go bankrupt. Good evening, Preeti ji, and a warm good evening to all. There are just 2 points we should consider here. What are the farmers doing and how is the government reacting to it? Now, when we can give people, a labor laws can give somebody a minimum wage, why can't a farmer be given a MSP for every crop? It is just the will that is not there. The money is always there. If 14 lakh crores of corporates can be written off, why can't 2 lakh crores of farmers be written off? It is again a question of your priorities and nothing else. The money is there. Now, when the farmers in 2021 laid off their siege, what were the things that were discussed? There were certain solemn guarantees that this government gave them. MSP was one of them. Swaminathan Commission will be implemented. That is, your input cost plus 50% will be given as MSP. There was a talk about farm loan waiver.
There was that for the real marginalized farmers, we'll be giving them pension. There was a talk about, at least a martyrs memorial to be built in Delhi for 700 people who lost their life. What has this great government done in the last 2 years and 3 months when those protests were called off? Zilch, zero, anda. Not one step has been taken on any of these. So in a democracy, what can the farmers do? The Constitution gives them the right to protest, and that is what they're doing. And how's the government reacting to it? Preeti ji, I'll just request you to come over to the border between Punjab and Haryana. It doesn't look like an interstate border. It looks like a war zone. You have nails that have been dug into the road. You have barbed wires. But Mr. Sandhu, you yourself, okay, Mr. Sandhu, that is okay. On that account, yes, but once again, you're being charged of politicizing a protest and making it more about your political outfit than what the protest is about, sir. It is not. Is Congress spearheading this protest? The only thing we are doing is we are giving them support. Now, is that also a crime in Modi's India that you cannot give somebody support when he's in the right? This is news to me. Anila Singh, I'll come to you. I want to cut across. Okay, let's cut across to one of the protesting farmers there. Choudhry Pushpendra Singh is joining us. Choudhry Pushpendra ji, एक तो बात तय है कि देखिए इस बार जो सारे BQU के फैक्शंस थे, जो सारे फार्म यूनिट के फैक्शंस थे, वो इकट्ठा नहीं हैं. आधे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आधों ने मना कर दिया है. पर आपकी की डिमांड्स क्या हैं पुष्पेंद्र जी? क्योंकि अगर आप MSP को देखें और आपकी जो डिमांड है कि हर क्रॉप पे MSP जाए या +11 पे MSP जाए, वो तो थोड़ी आपको लगता नहीं है कि वो डिमांड कुछ ज्यादा ही है? क्योंकि अगर हर क्रॉप पे MSP मिलने लग गया तो फिर जो स्टेट है वो तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा. पुष्पेंद्र जी, नहीं, देखिए, ये डिमांड ये नहीं है कि स्टेट को खरीदना है या सरकार को खरीदना है. डिमांड ये है कि एक मिनिमम प्राइस जो है मार्केट में होगा और उससे नीचे जो भी विलिंगली मार्केट में आएगा, अपने आप खरीदने आएगा, वो उस रेट से नीचे नहीं खरीदेगा. हम ये नहीं कह रहे सारा सामान सरकार को खरीदना है. और MSP की लीगल गारंटी की ये बात है. और जो MSP तय होगा वो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार तय होगा, जिनको इन्होंने अभी भारत रत्न भी दिया है. तो उनके सिद्धांत को भी मान लो, चौधरी चरण सिंह जी की बात भी मान लो कि किसानों को अच्छी जो है कीमत मिलनी चाहिए. देखिए, हम इसमें अंत में प्राइस देश कैसे पे करने वाला है. धीरे धीरे ये किसान जब घाटे में जाते जाएंगे, ये खेती छोड़ते चले जाएंगे और अंत में कॉर्पोरेट का कब्जा जब खेती पे हो जाएगा, तो आप लोगों को आज जो 40 रुपए में आटा मिल रहा है, 100 रुपए में 150 रुपए में मिलेगा. आप देख लें, बर्गर 400-500 रुपए में, पिज्जा खाते हैं आप लोग, कितना उसमें गेहूं चावल होता है और कितना उसमें सामान होता है. तो ये चीजें ना हो आगे जाकर के, तो देश के किसान की इकोनॉमिक वायबिलिटी बने रहने चाहिए. उसके लिए निश्चित रूप से उसको सही प्राइस मिलना चाहिए. तो जो तय है वो मिलना चाहिए. मान लीजिए ये इंडिया टुडे वाले आपसे तनख्वाह तय करें, भाई आपकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना होगी, और बाद में उसको ना दें, तो आप तो उसको जो है प्रोटेस्ट करेंगे. उसके अलावा ये कहें कि नहीं, अच्छी कॉफी पिलाएंगे, बढ़िया आपकी चेयर होगी, बढ़िया आपका दफ्तर होगा, लेकिन तनख्वाह नहीं देंगे. तो सबसे मूल मुद्दा ये है कि हमें इकोनॉमिक प्राइस, जो सरकार खुद कहती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये मिनिमम आपको मिलना चाहिए, जिससे कि आप वायबल रहे. पुष्पेंद्र जी, एक चीज बताइए, यहाँ के जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ बोला है कि देखिए ये सारा पॉलिटिकल मामला है, चुनाव आ रहे हैं 2 महीने में. अभी किसानों को क्या याद आ गया कि MSP डिलीवर नहीं किया था? जो प्रोमिसेस थे वो डिलीवर किए जाएंगे टाइम बाउंड मैनर में. नहीं, इस सरकार का जो टर्म है वो खत्म हो गया और आखिरी सेशन भी खत्म हो गया. इसमें जो कानून बनाने का टाइम था वो 10 फरवरी तक था, और 2 साल पहले का ये मुद्दा है. 2 साल पहले इस बात को तय करके हम लोग उठे थे दिल्ली के बॉर्डर से. तो 2 साल तक हमने इंतजार किया. इन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी की भी रिपोर्ट कोई नहीं आई है. तो इनको कानून अब कैसे बनेगा? कानून जब संसद का सत्र ही खत्म हो गया और इसके सारे सत्र खत्म हो गए इस सरकार के, तो इसके बाद अब कानून कैसे बनेगा? मैं अनिला सिंह को इस कॉन्वर्सेशन में लेके आना चाहती हूँ, बट चौधरी जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी. किसानों को क्या लगता है कि जो प्रॉमिस किए गए थे, जो वायदे किए गए थे, वो अभी डिलीवर नहीं हुए हैं? कौन सा वायदा डिलीवर नहीं हुआ है? MSP की लीगल गारंटी का सबसे मेन मुद्दा है. उसके अलावा किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगाए थे वो वापसी है, कर्जा माफी की बात है. अजय मिश्रा टेनी जो लखीमपुर कांड का जो है एक्यूज्ड है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, और किसानों की पेंशन है. बाकी वो 10-12 मांगों का पूरा चार्टर है, पर मेन मांग ये है जो मैंने आपको बताई. ये तो जो आपने अगर ये बताया, MSP की लीगल गारंटी दे दें
तो कहीं ना कहीं जो है एक आगे बात बन सकती है, लेकिन सरकार की नीयत लीगल गारंटी देने की नहीं है। क्यों नहीं देना चाहते, मेरी समझ से बाहर है। जी अनिला सिंह जी रिस्पॉन्ड करेंगी इसमें, क्योंकि इसमें बात वो भी आती है जो टेनी जी के लड़के थे और जो गाड़ी चलाई थी फार्मर्स में, अब उत्तर प्रदेश में जहां से आप ही आती हैं वो भी एक डिमांड है, पर ये प्रॉमिसेस वायदे किए गए थे, निभाए नहीं गए। जी, मैं तीन बात यहाँ पर करूंगी। शुरुआत करूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार को टारगेट किया है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी, साहब 2014 से पहले क्या किसान नहीं थे? सबसे ज्यादा सरकार आपकी रही है भारत में, आपने किसानों के लिए क्या किया? आपने इस प्रकार की गवर्नेंस दी, इस प्रकार के कदम उठाए कि किसान जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। खैर छोड़िए, जिन राज्यों में आपकी सरकार है, आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं साहब? जहां जहां आपकी सरकार राज करती गई, वहां किसान जो है कर्जे में डूबता चला गया और आत्महत्या की तरफ बढ़ता चला गया। तो हमें पाठ ना पढ़ाएं कि किसानों के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पुष्पेंद्र जी बैठे हुए हैं, मेरे भाई की तरह, छोटे भाई की तरह, मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं इनको जानती हूँ, किसानों के लिए निरंतर दिन रात लड़ते हैं। पर मैं अपने भाई से ये पूछना चाहूंगी, आप ये बताइए कि अगर 2014-15 से लेकर अगर हम 24-25 की बात करते हैं, गेहूं का जो एमएसपी में वृद्धि हुई है, क्या वो 102% नहीं हुई है? जौ में क्या 60% नहीं हुई है? चना में 60% नहीं हुई है? और जो मसूर तो तकरीबन जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 425 रुपए का इजाफा हुआ है। यहाँ पर अगर पुष्पेंद्र जी को बोलने दीजिए, चलिए पुष्पेंद्र जी आप रिस्पॉन्ड करेंगे अनिला सिंह जी को। I just want to conclude by saying one thing here. बोलिए। So when Modi Sarkar says that I give you guarantee means कि आपको बहुत सारी opportunities और बहुत सारे आपके I'm running out of time। पुष्पेंद्र जी आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे अनिला सिंह जी ने जो बोला है? जी, देखिए इसमें घोषणा की बात नहीं है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात है। आप घोषणा कर दें कि जो है हम गेहूं की एमएसपी 3,000 रुपए प्रति कुंटल देंगे, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन यदि नहीं होता है और हम मजबूर है अपनी 1200, 1500, 2000 के रेट में बेचने के लिए, तो वो गैप जो है उसी के लिए तो हम चाह रहे हैं कि लीगल गारंटी हो। 3,000 रुपए से नीचे कोई भी व्यक्ति जो विलिंगली मार्केट में आता है वो ना खरीदे, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें आप, यही है, इसलिए लीगल गारंटी की हम बात कर रहे हैं। जी चलिए, क्विक वर्ड फ्रॉम द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। Yeah, thank you. You wanted to come and make your interjection. Anila ji, I'll just like to tell you because you directly questioned me. हमारे टेन्योर में 2004 से लेके 14 तक किसानों की आय 5.9% से बढ़ी, आपके टेन्योर में 1.2% से बढ़ रही है। दैट इज द डिफरेंस। आपके टेन्योर में suicides are 2.7 times more than it was in our term. Okay. And I'll just jog your memory back to 1988. लास्ट टाइम जब दिल्ली चलो हुआ था, MS टिकैत जी ने किया था ये, राजीव गांधी जी तब प्राइम मिनिस्टर थे। कोई टीयर गैस नहीं उन पे फायर हुए थे, कोई वाटर कैनन उसके ऊपर फायर नहीं हुए थे, कोई रोड के ऊपर किल नहीं लगे थे, कोई बैरिकेडिंग नहीं हुई थी। वो आके बोट क्लब में बैठे थे, जो उनका देश है, उनका हक है। एक हफ्ते में गवर्नमेंट ने उनके साथ एग्रीमेंट किया। You've made your point. I appreciate all our guests for joining us, but we're going to leave it at that. We've run out of time, but it's going to be a conversation which is going to spill forward, because what we've been given to understand that the committee which has been put together to intervene and mediate with the farmers, there's not much headway, at least for now, that is coming in. So in all probabilities, what we will see tomorrow is the farmers marching towards the borders of the national capital with the clarion call of Chalo Dilli. However, Section 144 in place, heavy barricading like we showed you. We'll get you more tomorrow, because that's the day where the farmers' march is going to take place. Quick break. Up next, Rahul Kamal. Earlier and now. Once a staunch supporter of the Congress, a former Chief Minister of Maharashtra, and a former State Congress President, Ashok Chauhan has resigned from the party. The 65-year-old leader from Nanded district submitted his resignation to the Maharashtra Congress chief Nana Patole.
Chauhan also stepped down as a party MLA, resigning as a member of the assembly without citing any specific reason. The BJP described Chauhan's departure as another example of the suffocating environment many leaders face within the Congress. BJP leader Devendra Fadnavis suggested that the former Maharashtra CM might soon join the BJP. However, Ashok Chauhan refused to reveal his future plans. He characterized his resignation as a personal decision and refrained from criticizing the top Congress leadership. Congress, on the other hand, reacted strongly, labeling Chauhan's departure as an act of betrayal and simultaneously as a blessing in disguise for the new generation of leadership within the party. Meanwhile, the Sharad Pawar faction implied that the BJP had been pressuring opposition leaders to leave their party if they wish to avoid prosecution. Chauhan's resignation follows Baba Siddiqui and Milind Diora's departure from the Congress party in Maharashtra. A fresh blow for the party in the state ahead. Congress expelling its well-known spokesperson and TV face. Acharya Pramod Krishnam facing the axe after his profuse praise for Prime Minister Modi and Ram Mandir. The spiritual leader had also slammed Congress for boycotting the Ram Mandir Pran Pratishtha. Krishnam had also called on the Prime Minister after saying that the Ram Mandir became a reality only due to Narendra Modi. Krishnam had also slammed Rahul Gandhi, calling him inaccessible, unlike Modi. The Congress accused Krishnam of repeated attacks on the party and anti-party activities. While Congress called it disciplinary action, the BJP said it was punishment for exposing Rahul Gandhi and Congress. Congress, meanwhile, suffered another setback in Maharashtra. After Milind Diora joined Eknath Shinde's Shiv Sena, Congress's celebrity face in Mumbai, Baba Siddiqui, quit to join Ajit Pawar's NCP. Bureau Report, India Today. इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। किसानों के प्रोटेस्ट को देखते हुए यहां पर धारा 144 लगा दी गई है और भारी पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती की गई है। एक तरफ अगर आप देखें तो यहां पर बैरिकेटिंग की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहां पर उनकी भारी तैनाती कर दी है। अभी अभी जो एक पूरी बस है रैपिड एक्शन फोर्स की वो यहां पर पहुंची हुई है। ये देखिए इस तरीके से 13 फरवरी को जो पंजाब और हरियाणा और अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे उसको देखते हुए यहाँ पर ये गाजीपुर पर पूरी तैनाती की गई है। आपको याद होगा इसके पहले जब किसानों का प्रोटेस्ट हुआ था तो गाजीपुर बॉर्डर पर ही जो किसान है वो धरने पर बैठ गए थे, रोड ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से ही जो रोड्स है उनको ब्लॉक कर रही है।
गाजीपुर का जो फ्लाईओवर है वो फिलहाल चालू है, लेकिन ये नीचे की तरफ जो सड़क आती है गाजीपुर से, दिल्ली से कनेक्ट होती है गाजियाबाद की तरफ, ये पूरी रोड ब्लॉक कर दी गई है। जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ सफर करते हैं उनको कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो नीचे की अगर जो सड़क है उसको ब्लॉक कर दिया गया। देखिए इस तरीके से जो ये यातायात है वो डाइवर्ट हो रहा है दूसरे रूट पर, तो उससे मशक्कत जरूर हो सकती है लोगों को आज और आने वाले कुछ दिनों में, अगर किसानों और सरकार के बीच वार्तालाप जो है वो सफल नहीं होती है तो। कैमरामैन मृदुल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस में जो जननेता है उनको ये लगता है कि अब देश के मुख्य प्रवाह में हमने काम करना चाहिए, क्योंकि देश हित की बात को भी राजनीति के चलते दरकिनार करने का काम कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, इसको देखते हुए कई नेताओं को ये लगता है कि हमने देश की मुख्य धारा में काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा, तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या।